Good evening and welcome. Good evening. I welcome all the guests and all the regular participants of our Wednesday program. I'm Shashi Dhar, your host, and we are in the Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And this is a Wednesday session, and the agenda for today's session is healing the ego. And this is in continuation with what we have done the last 2 weeks of unmasking the ego. Okay, so let's have some people share what they have got out of the 2 sessions that we have done so far. We have done 2 sessions on unmasking the ego. So how many of you have identified the type of ego which is dominant in your life, by which or through which you are operating in normal life? And how did you see that? What are the masks that the ego is wearing to survive in this world? So anything on that, because what we're going to say now in this session is going to be a build up on that. So anybody who wants to share, पिछले 2 सेशन से आपको क्या मिला है, अपने ईगो के बारे में आपने क्या जाना है, इंट्रोस्पेक्शन किया आपने, you must have seen your ego, you must have seen the mask that you're wearing. So how are you comfortable with your survival mechanism of ego? Yes. So let's have some sharing first and then we move on. कौन बोलना चाहेंगे? And if you have any questions, definitely you should ask question. किसी भी सेशन से अगर आपके कोई सवाल हैं. Yes, Parth, you are raise your hand. Please go ahead. So first of all, एक तो ये हुआ कि भाई एक थोड़ा सा नया तरीका है सोचने का, to not only like think about the things which are recently happening and go back further into like childhood state and identify the root cause which is happening. ठीक है, एक और जैसा था सेशन में हमने डिस्कस किया था, एक इंटेलिजेंस वाला पार्ट था. ठीक है, इसके अलावा 2-3 चीजें भी और निकली थी, कहीं ना कहीं मैं अवेयर हुआ. एंड रिसेंटली मैं कह सकता हूँ कि एक मैंने अपने एंगर को लेके भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस आनी शुरू हो गई कि कुछ चीजों पे मेरे को माइक्रो एग्रेशन होता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको मैं एक्सटर्नल तरीके से दिखाऊं या कुछ हो या बहुत देर तक रहे. ये बात जरूर है कि लाइक हाल ही में लाइक जो टाइम है मेरा एंगर होल्ड करने का वो कम हुआ है. ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो ट्रिगर जरूर होता है. सो कहीं तो उसको मैं कहीं ना कहीं अब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट्स द रीजन फॉर दैट. Okay. बाकी एक और प्रोग्रेस ये हुआ बिकॉज ऑफ दैट रूट कॉज वाला थिंग. सो आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड समटाइम्स वी कन्वर्स फॉर आवर्स आल्सो. ठीक है, एंड ही ओपनड अप टू मी एंड like very similar circumstances he discussed. So I also pointed out that same thing, like same intelligence thing which we discussed, same thing came out in him also. So कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं हेल्प हुआ, उसका भी थोड़ा मेरा भी हुआ, क्योंकि साथ साथ में अपना भी पता चलता है आप किसी से भी बात करते हो तो. Very good, Parth. So that is a very good introspection. Let's acknowledge Parth. And for those who are not clear what Parth is sharing, so he has recognized the type of ego which was prevalent in his life, which was dominating his life. So which was more of a victim ego, right? And the mask he was wearing is I am intelligent, and that is what he is sharing here. So when you could distinguish that, something definitely will open up, and we will see how it opens up and how we can take it forward in a big way in this session. So thank you, Parth, for sharing that. Yes. Anybody else who would like to share? What is the ego type which is dominant in your life? And what is the mask that you are wearing? This is the way where we are going to proceed. So anybody else who has seen something? कितने लोगों ने स्वाध्याय किया और ये देखा? I hope my voice is clear. Video is not stuck. Yeah, good. Everybody was looking like a statue. मेरे को लगा my video is gone. Okay, so who would like to share? Anybody who has seen what kind of ego is dominant in your life? Yes, Kunjan ji, go ahead. Sir, I was into fear of camera, like coming out of my zone and sitting in front of the camera. And Okay. ये मेरी बहुत बड़ी ईगो थी
शायद। तो ये भी मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि दैट हाउ टू कम इनटू द ऑनटू द कैमरा। Okay. तो कुछ ऐसा होने वाला है लाइफ में कि कैमरा पे अब आना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो फियर से बाहर निकलना पड़ेगा। Okay. Okay. Very good. So you have identified that you were fearful of maybe public appearance. I would say it that way. Yes, public appearance. Not Yeah. not on camera like that, because you have been on the Zoom session for long, so you are not scared of camera. Or it is like public appearance. कि Yes, अगर सब public. लोगों ने मुझे देखा ये करते हुए तो हाय राम अब क्या होगा, kind of a thing, right? So it is some Yes, kind of a fear of being found out. yes. Fear of being found out, and that is what ego is actually scared of. Ego is scared of finding out, being found out. That's why ego is always wearing a mask, correct? And we've seen the formation years, 5 years, 10 years, 15 years, 17 years. These are the ages when the ego is getting into the final shape. और उस समय you have to understand it is the life of a child or a teenager. So they are very vulnerable kind of a situation. So they don't want to be found out. They just want to hide. है ना? कितने लोग छिपके रहना चाहते हैं भीड़ में, कोई मेरे को ना पहचाने, kind of a thing, right? Because I that was time the very child feels. I was very active in school days and even in college days and after that also in my business. But something happened in my life that I got feared. I Yeah, got a you fear got energy. scared, you got a Yeah, fear. I got scared. You have to understand any ego personality or ego type will come only out of fear of a survival situation, of a critical situation. अच्छी situation में ego का presence नहीं होगा, because ego is a mechanism, is defense mechanism for survival. You have to understand that way. And it was formed when the child thought that this is a survival issue, and that is when the ego formed. Correct? And we have seen the kind of statements the child makes. I'm weak, I'm helpless, I'm scared. Okay. What all does the child say otherwise? Something is wrong. I can't trust them. I don't belong to this place. I am on my own. These are the statements a child is making, and these are crisis situations. That is why the ego is getting formed. So ego is a survival mechanism. We have seen that, right? Good. So good, Gunjanji, you have identified that, and you have also seen the mask, right? So the mask is what? अगर सबके सामने नहीं आना है तो you simply say I'm not interested. मेरे को आना ही नहीं है ना? तो you avoid that. आप बड़े situations को avoid कर देते हो. So now take it off. Ego is based in fear, but you are not your ego. You are somebody else. You are part of the divine. Correct. So you can face the situation with a lot of love. That is Yes, what sir. that is what the learning is. Very good, Gunjanji. Thank you for sharing that. Thank you. Yes, we will dwell more into this in this session. But meanwhile, let's have some more people share. And meanwhile, Galaxy A30, if you can identify who you are, if you can share something about you, we can connect with you. Yes, कौन बोलना चाहेंगे और? And see into your life. Don't look into theoretical knowledge. Don't look into what you have learned in the books. See in your life what has happened, what kind of a person you have become now, and what were some of the situations, even if you don't remember the incidents. What is the kind of a person you have become now? That is not you. That is a mask. The personality that you are showing now to the people is a mask, and you are hiding something. What you're hiding is your actual ego. Yes, that is what we learned in the unmasking the ego. So you may be weak, and you may have a mask. I am confident. I am intelligent. I am hardworking. I am a very friendly person, because you don't want to be found out that you are weak, or you are helpless, or you are worthless for that matter. Yes, Parth. I would like to elaborate on some things like जो मेरा behavior था उसके साथ like मेरे friend के साथ बात करते हुए. So when we were discussing like we were talking about intelligence. Okay. कि how do you define intelligence या आप he was asking me कि तुम कैसे समझते हो कि that you are intelligent actually. ठीक है. Then in elaborating और ये सब discuss करते हुए I was like कि everyone is intelligent in their own right. ठीक है. So I acknowledge that thing. मतलब मैं अपने
कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस में इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, और लोग अलग अलग तरीके से होते हैं. सम पीपल आर इमोशनली इंटेलिजेंट, सम पीपल आर इनटू क्रिएटिव एंड सम पीपल आर इनटू रैशनल थिंग्स. सो हर किसी की अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है. आई एक्नॉलेज दैट. एंड कहीं ना कहीं मैं उसको भी वही चीज पॉइंट आउट कर रहा था, दैट यू कैन नॉट डिफाइन इंटेलिजेंस इन जस्ट वन ब्रैकेट की जो बड़ा बड़ा इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकता है फिजिक्स का. ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है. एंड one more thing was common between him and me in our childhood, that a lot of people used to tell us that we are intelligent and we'll do something big. That kahin na kahin, that thing affirmed our own thoughts, ठीक है. So I was like कि जिन लोगों ने हमको बोला है ये चीज, कहीं ना कहीं subconsciously they are aspiring to be intelligent in that domain in which we are, you know, कहीं ना कहीं उस चीज के हम Parth, I master. understand what you're trying to say, but this is slightly deviating from the topic that we are in. We are looking at the ego, not the mask. Yeah. And you are elaborating more on the mask of I am intelligent, right? Mhm. So I will have to go a little bit step back. We are not Yeah. here to analyze the mask. We are here to analyze the ego, and we are finding it, looking at ways how to heal the ego. Okay. So I will take that discussion with you sometime later. Yeah. Not now, because that is taking us away from the topic. All right, let's acknowledge Parth, and thank you for your understanding, Parth. Yes. Anybody else who would like to share? क्या ego आपका dominating है life में? Focus on my question now. And what is the mask that you are wearing? If you can see this, then we can go to the next point of how to heal that ego. So anybody who would like to share? विजय जी, अनिरुद्ध जी, हर्ष जी, कुछ दिख रहा है? कौन सा ईगो डोमिनेटिंग है आपकी लाइफ में या था? अब तो खैर आप स्पिरिचुअल साधना से आगे आ गए होंगे, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग योर टीनेज, adulthood, there must be some ego which was dominating. How did you overcome that? Or how did you not overcome that? How did you embrace that ego? Let me put that. Or how did you heal that ego? Yes, yes, Vijay ji. So Shashi Dhar ji, going back in time, I think I had the ego of or the air that I am intelligent, and I have passed out from a premier institute, and I am the best, Right. And there were issues around acceptance. But in the process, maybe around 20 years back, things changed, and things changed for the good. Okay. So let me put it this way: you developed some kind of a superiority complex. That is the ego that you had, right? And that was Yeah. basically to hide something of that I am not accepted. Is it? I think so. Yeah, Yeah. I think so. But that's good. That's good enough. It's very clear, right? A child says, I am not accepted, and the only way to get love is what? And the only way to get acceptance is to dominate them. I am confident. I am overconfident. Ab kar lo baat. Now people will accept me. No, so that is a very good survival mechanism. Very good, Vijay. That's the right way to find out your ego and the mask. Good. So I hope everybody is clear. I don't want everybody to share, but everybody should look into their life and find out which ego is dominant and what is the mask that you are wearing. Everybody clear on this? Agar koi clear nahi hai, they should have a discussion with me. Yeah, because what we are going to do now is we are going ahead and trying to heal the ego. Now let us talk about healing the ego. Now you have understood your ego, which is just to in a broader sense, it is like I am weak, I am small, I am helpless, I am hopeless, I am worthless. Some of it might look exaggerated if it is not for you, but जिनका है उनको समझ में आ जाएगा. I am not loved, I am not worthy of love, I can't trust anybody, I am on my own. Own means disconnection. I don't belong to this place. Okay, so these are the statements a child has made, and he has cut himself away from the surrounding or the people in his life, and the suffering starts because the ego always thrives in division, separation. I versus you, I versus them. That is the language ego speaks. Correct. तो आप और लोगों से कट आउट हो गए और उसको सर्वाइव करने के लिए आपने एक मास्क पहन लिया
I am intelligent, I am hardworking, I am pleasing, I am a very nice person, kind of a thing. I am extrovert, I am confident. So these are the masks. These are not actual confidence. Once and pressure कहाँ आता है? जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है लाइफ में जब ये मास्क आपके काम नहीं करते, when these masks are not able to serve you in a particular situation, then there is a terrible or a miserable breakdown. Breakdown in relationship, breakdown in job, breakdown, whatever kind of breakdowns that you can think of, right? And then the person ends up in depression and doesn't know what to do in life. So hopelessness, helplessness, worthlessness, frustration, desperation, ये सब चीजें आ जाती हैं, and he is driven to the verge of depression or suicide attempt or suicide. That can be a breakdown in life, right? So very, very important that we heal this ego. Now, what do you mean by healing this ego? What do you mean by healing this ego? I'm not asking how do you heal the ego. Ego को heal करने का मतलब क्या है? So understand the life of a child. Child is 5 years old. Let's take that situation. 5 साल में उस बच्चे के साथ कुछ हुआ और उस बच्चे ने डिसाइड किया nobody loves me. Okay. So an unloved child की एनर्जी आपके साथ चल रही है. Your life is being dominated by the energy of that 5-year-old who is unloved, and that is the ego which is dominating your life. Correct? So healing the ego actually means you embrace that ego. You don't have to destroy the ego. You have to embrace that ego. You have to accept, okay, as a 5-year-old, I was unloved in that situation. Now, as a logical and mature mind, I can accept that. I accept that child who is unloved, and I embrace that ego in me. So what happens? The child of 5-year-old is integrated into you, into your being as an adult, and now you are free from that ego. This is in hypnotherapy, we call this inner child healing. Correct? So this is one instance. I'm just giving you an example. तो उसको healing का मतलब ये है कि आप उसको embrace कर रहे हो अपने साथ. You are integrating it into your system, into your being. Now that ego will not bother you or will not make you suffer because it is accepted. उसको attention मिल गई है, उसकी energy heal हो गई है, उसको acceptance मिल गई है. Now the child is not crying. Now the child is healed. So the inner child healing means the inner child who is unloved, who is miserable, who wanted to gain acceptance, जिसको नहीं मिला, उसको अब आप heal करके अपने personality में, अपने being में integrate कर रहे हो. That is what is called healing of the ego. Is the concept clear? Is the concept clear? Now this could be 5 years, this could be 12 years, this could be 17 years, this could be 21 years. After 21, it is a repetition of these patterns. So today, if you're 40-year-old or 50-year-old, and if you are having a similar situation, the ego will be triggered. Something is wrong. Everybody is cheating me. Everybody around me is cheating me. So I can't trust them. ये सब situations आएंगे और ego दोबारा trigger हो जाएगा. So what are the corrective steps that we can take? Healing the ego तो बाद में आएगा. लेकिन सबसे पहले corrective action लेना है ताकि हम उस ego के शिकंजे में दोबारा ना फंस जाएं. What can we say? So let us take it. A 5-year-old child said something is wrong. As an adult now, maybe if I am 58 years old, yeah, Amit ji around 45, 50 years old. So now at a mature age, at a logical mind, what can you say about that situation? क्या हम अलग बोल सकते हैं? Something is wrong की जगह क्या बोल सकते हैं जिससे ego trigger ना हो? Now we have understood the spiritual laws also. We know the divine laws which operate the universe. क्या बोल सकते हैं? Something is wrong की जगह पे ताकि ego trigger ना हो. That is the first step to stopping the ego into getting triggered. क्या बोलेंगे? Think fast. I need to do something about it. It has to be a very, very, you can say, crisp statement. Child was very, very strong in his statement. Something is wrong.
अब उस स्टेटमेंट को ओवरराइट करना है, क्या बोलोगे? Everything is not right. एवरीथिंग इज Not right. एवरीथिंग इज नॉट राइट। All is well, all is well, all is well. किसने बोला? किसने बोला ये? विजय जी। लेट्स एक्नॉलेज विजय जी फॉर दैट वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट। समथिंग इज रॉन्ग का जबरदस्त तोड़ है ना, ऑल इज वेल। हाँ, कितने लोगों ने देखा है 3 इडियट्स? हाँ, हमारे रणछोड़ बाबा क्या बोलते हैं उसमें? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सिचुएशन इज बैड बट ही सेज ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। राइट? दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट एंड दिस कैन स्टॉप योर ईगो फ्रॉम ट्रिगरिंग। सर्वाइवल इश्यू में नहीं जाएगा, सर्वाइवल मोड में नहीं जाएगा। ऑल इज वेल, वेरी गुड। Any other statement? Any other statement which you can think of? Everything will be all right. Everything is all right is already in that contained in that statement. All is well is a perfect statement. Will be all right नहीं, everything is right. Everything नहीं is right. चाहिए हमको, will be नहीं, future में नहीं। तो all is well is good. All would be well नहीं बोला, all is well। अभी सब ठीक है, सब ठीक है, शांत। बच्चों को क्या बोलता है? सब ठीक है, शांत, चुप हो जाओ। Like that. So the child will keep quiet. The child is getting the attention. वो शांत हो जाएगा, रोएगा नहीं तो ईगो ट्रिगर नहीं होगा। बच्चा रोएगा तो ट्रिगर हुआ ईगो, बिकॉज चाइल्ड ईगो है ये। 5 साल का बच्चा है ना, समझ रहे सब? So all is well is a very good statement. Something else? Anything else? Ami ji, anything else coming to you? हाँ, कौन बोल रहे? Everything happens for a good reason. Very good बात। Everything happens for a good reason. इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, जो अमित जी का फेवरेट स्टेटमेंट है, whatever happens happens for good, WHHFG। हाँ, तो इट्स अ गुड स्टेटमेंट, एब्रिविएशन भी है। Pardon? Accept the situation. Why we need a statement? We need a statement which we will make so that you accept the situation. What will be the statement? That is what we are looking at. So all is well is a good statement. Whatever happens happens for the good is a good statement. Correct? और क्या बोल सकते हैं? सर सोचिए। एक ये है कि हम अपने माइंड में पहले ही सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं जब होगा तब देखा जाएगा। जब होगा तब देखा जाएगा इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर द चाइल्ड। चाइल्ड को शांत करना है हमने, अब अपने लॉजिकल माइंड को शांत मत करिए। लॉजिकल माइंड से हमने वो स्टेटमेंट ढूंढना है जिससे कि चाइल्ड शांत हो। एक बच्चा है, रो रहा है, 5 साल का बच्चा आपके अंदर है जो रो रहा है, उसी ने ईगो ट्रिगर किया हुआ है, तो उसको लगेगा समथिंग इज रॉन्ग, वो ट्रिगर हो जाएगा और वो बचने के लिए फिर झूठ बोलेगा, चीट करेगा, बचने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। राइट? तो उसको शांत करना है। जब तक वो शांत नहीं होगा आपका ईगो ट्रिगर होगा ही होगा। तो ऑल इज वेल इज गुड, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड इज परफेक्ट। शांत हो जाएगा उससे। आई होप एवरीबडी कैन कनेक्ट विद व्हाट आई एम सेइंग। यस, सो गिव मी मोर स्टेटमेंट्स। और क्या स्टेटमेंट बोल सकते हो? और क्या बोल सकते हो? थिंक। Everybody should think and give a statement because that will be the statement which will be good for you. वो आपके लिए सही होगा, इसीलिए आप बोल रहे हैं। वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आ जाएगा। आई एम ए वर्दी चाइल्ड ऑफ गॉड, कितने लोगों ने सुना? आई एम ए ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। अब जो मेरे साथ होगा अच्छा ही होगा। राइट? सो दैट इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। आई एम ए ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। आई एम कनेक्टेड टू एवरीबडी। आई एम ऑन माई ओन की जगह बोलो, आई एम कनेक्टेड टू एवरीबडी। आई एम नॉट अटैच्ड टू एवरीबडी, आई एम कनेक्टेड टू एवरीबडी। I am divine, everybody is divine, so I can use a small statement like this. I am connected to everybody. Is it a fact? Yes, it is a fact. We all know, logical mind knows, right? Or I have acceptance of all. वो थोड़ा सा अगले स्टेप में आ जाएगा। पहले एक स्टेप, अभी कुछ खराब है, समथिंग इज हैपनिंग विच इज नॉट राइट। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी में बिजनेस में नुकसान हो गया, ठीक है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गई, वो सिचुएशन सामने है। अब उस सिचुएशन में ईगो ट्रिगर ना हो, इसलिए हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, है ना? तो आई हैव एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल विल नॉट सॉल्व दैट सिचुएशन। तो ये बोलना है जैसे वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड, इसमें कुछ अच्छा होगा। मेरे कर्मों के हिसाब से अभी मेरे को यही डिजर्विंग है, तो आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आई विल गेट वॉट एवर आई डिजर्व एज द बेस्ट। मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन अभी
कर्मों के हिसाब से मेरे को ये मिल रहा है, so let me accept that. Correct? Like that. So that should be the approach. Anything else? Or कुछ? Any statement which you feel can save you from the clutches of the ego. Downward spiral में नहीं जाना है. So these are good statements you can note down, right? We have seen 3 or 4. All is well. Whatever happens, happens for the good. I am a blessed child of God. And I am connected to everyone. I can trust everyone. This is a big one if you can take it. Because normally we don't trust people. तुरंत डाउट में आ जाते हैं, ये मुझसे ऐसे क्यों बात करने आया है, जरूर कोई इसका एजेंडा होगा, कोई पर्सनल एजेंडा लेके आया है, ही इज गोइंग टू चीट मी, ही इज गोइंग टू मेरा फायदा उठाएगा, like that. So you have to have some statements which will help you. So is that good enough? Is that good enough जो हमने अभी तक देखा? Right. So this will prevent your ego to get triggered. Yes or no? Ego trigger नहीं होगा. Now your logical mind, you can find a proper solution to it. Everybody okay with this? Yes. Now let us talk of ego is not getting triggered. Now you can think of, you have got some time to heal the ego. कैसे heal करोगे? कैसे heal करोगे? Now one way is very, very easy for you. Get hold of an expert. And there are many experts in this group. तो healer है, mind coach है, आप उनके पास जाओ, काउंसलिंग सेशन लो, अपने हीलिंग सेशन लो और हील हो जाओ, तो आपका ईगो हील हो जाएगा. इनफैक्ट whenever you are healing your ego only. You are healing your emotions, you are healing your ego. So basically you can take an expert advice, but that is not the session is for. This session is for how you can participate in your healing process. आपकी कोई responsibility है या नहीं है healing process में? है, right? So you have to be responsible for your healing process. How can you participate in your own healing process? It is your ego. Your ego has to be healed. You have to participate. Right? So how can you participate? The first thing is becoming responsible for the situation in your life. Now you may not have created the pain or the hurt. As a 5-year-old, you can say they were responsible for hurting me, so the child is crying. Yeah, fine, I understand. That situation was not in your control. The pain is not in your control, but you have to take the responsibility to heal it. Now you are an adult. You have to take the responsibility to heal it. Don't find excuses to blame them. Don't go into guilt mode. And don't ruin your life by blaming them for the rest of your life. It could be parents, it could be some teachers, it could be anybody in your life. उन्होंने जो करना था किया, but are you responsible for healing yourself? That will be the first step, how you participate in your healing process. So I will stop now and I will take some sharings so that you are also moving in the desired wavelength. So let's have some people share. What is opening up? Partha, I'll come to you. Let me see if anybody else is opening up. Then I will come to you. Alok ji, Vijay ji, you wanted to share? Yeah, I mean, Go ahead. or what I would think as a solution would be to first, as you rightly said, go to experts. Second would be to realize if there's a solution, then act. Action is key. Action takes you away from fear and moves you to the right direction. Okay. And the Right. third one, if you don't see a solution, then you have to accept. Then you have to Accept. And Accept. move on. accept. Okay, fine. So whatever is the situation is already come into your life, you better accept it. Because वो आ ही चुका है लाइफ में. चाहे वो बीमारी हो या एक्सीडेंट हो या रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो, वो तो हो ही चुका ना. तो you have to accept it. अगर solution देखते हो तो act करो. अगर solution नहीं दिखता है तो you have to accept the situation. Then it's no longer a problem. It's a constraint. No, what I'm saying is whether you find the solution or not, that's secondary. First accept the situation because it has already come into your life. There is no point of denying it. वो आ ही चुका है ना. Yeah. जॉब जानी है तो जा चुकी है जॉब. रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो चुका है. Now you see what best you can do.
First accept it. डिपेंड करता है इशू एफेमरल है कि रियल है। हाँ, that's fine. कभी कभी अनरियल सिचुएशन में भी माइंड सोचता है अरे यार ये तो फंस गए, you know? हाँ, तो you have to face the reality first, right? In that case, there is a solution, and then you have to act towards the solution. Perfect. And you can always take the expert advice, which is a normal thing that you said, which is perfectly right. Let's acknowledge Vijay ji. Very good. So that is the way to approach a solution to a situation. First, understand whether the situation is real or not. If it is real, accept it, and then find a solution to it. Perfect. Right? But you have to ensure that the ego is not triggered. So the initial statements are very, very important. Only then you can think of a solution. Varna, ego will always think, mar gaya, ab kya karu, jhoot bol, bhag. So if you're a lie, if your personality says lie and झूठ बोलो और भाग जाओ, बचपन में यही करके भागे थे आप, तो वो बचपन वाली सर्वाइवल मैकेनिज्म चलती रहेगी एंड यू विल बी इन द क्लचेस ऑफ ईगो. फर्स्ट यू हैव टू से ऑल इज वेल, इट्स ओके, लेट मी सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू. एक्सेप्ट करना है, मैं बोलता हूँ हाँ मैंने गलती की है, जो सजा देनी है दे दो, आई एक्सेप्ट इट. सो यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर मैच्योर एंड यू आर लॉजिकल, नॉट इमोशनल. Not emotions of a 5-year-old is not running you. That is important. Yes? Okay. Anybody else who has anything? Yes, Anirudh ji, go ahead. सर मैं पिछले 15 दिन से तीसरा प्रोग्राम है, तो काफी कुछ होमवर्क मिल गया मुझे ईगो के बारे में, परंतु कोई आंसर मैं अभी दे नहीं पा रहा हूँ. तो इसमें पहले तो ये है, एक अच्छा पॉइंट आपने बताया कि ईगो के लिए कि हमें हाइड नहीं करना है कुछ, तो दैट इज ए प्रॉब्लम. हाइड करने से मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि ईगो स्टार्ट होती है. ठीक है, हाइड तो आप कर सकते हैं कि जहाँ किसी का फायदा हो रहा है और किसी का नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा, वहाँ वो एक अलग बात है. अदरवाइज नॉर्मल केस में डोंट हाइड. तो जब हाइड नहीं करोगे तो ईगो आने के चांसेस कम हो जाएंगे. सर अपनी लाइफ से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. अच्छा, मैं फिर लाइफ में फिर मेरा तो बड़ा, मैं तो 15 दिन से यही सोच रहा था कि मुझे लाइफ में ईगो कब आई. ठीक है, तो बड़ा सोच रहा था कि कभी तो ईगो आई होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईगो ना आई हो. तो मैं बचपन से जब 10 साल था अब तक सोच रहा था कि ईगो कब आई है. तो पता है नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ईगो कब आई है. मुझे अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि कभी तो आई होगी ईगो. ऐसा तो होता नहीं कि ईगो ना आई हो, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अपने आप को. तो पहला तो मैंने एक ये चीज था कि मैंने शुरू से ये ध्यान कर लिया कि हाइड नहीं करना है. तो ना झूठ बोलना है ना हाइड करना है, तो शायद ये मुझे फायदा किया हो लाइफ में. ओके. तो भी बात है, छुपानी नहीं है, बोल दिया, ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ेगी, फाइन हो जाएगा, यही तो होगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा. ना झूठ बोलना है, तो झूठ बोलने के बाद फिर दोबारा झूठ बोलो. तो इसको, इन दोनों चीजों को अवॉइड किया. अनिरुद्ध जी, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, आपका बहुत लॉजिकल माइंड चल रहा है, ये मैच्योर माइंड बोल रहा है, बच्चे का माइंड नहीं बोल रहा है. बच्चे का माइंड इमोशनल होता है. तो आपको वो सिचुएशन देखनी है जब आप इमोशनल थे, वल्नरेबल थे, वीक थे, हेल्पलेस थे, तब आपने कुछ कहा, उससे आपका एक ईगो ट्रिगर हुआ, वो आप पकड़ नहीं पाए हैं शायद. मैं पकड़ नहीं पाया. मैं इतना थोड़ा सा जरूर इंट्रोस्पेक्शन करिए, क्योंकि लॉजिकल माइंड से पता नहीं चलेगा. लॉजिकल माइंड तो आप अभी लगा रहे हैं. परंतु इतना जरूर है, ये मैं जैसे आपने आज बताया, ये लगा कि हाइड करके या झूठ बोलने से ईगो हो जाती है. तो अगर आप झूठ बोलना छोड़ दोगे और हाइड करना छोड़ सर दोगे. हमको वो नहीं चाहिए, हमको अपनी लाइफ से देखना, आपकी लाइफ में क्या है, औरों की लाइफ में नहीं जाना. सर मैं अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ ना. मैं ये जो आप देखिए थोड़ा सा, वी विल डिस्कस दिस लेटर. मैंने ये जो हाइड का और झूठ का जो बोल है, ये मैं अपनी लाइफ से बताया है कि मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि हाइड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तो उससे मुझे फायदा हुआ है. ओके, आई अंडरस्टूड, आपका पॉइंट मेरे को समझ में आ गया. तो इससे ईगो नहीं बना, किसी और चीज से ईगो बना. अब वो देखिए पहले. आप ये बता रहे हैं ईगो कहाँ से नहीं बना है, मेरे को वो देखना है जहाँ पे ईगो बना है. अब मेरे पास मैंने 2 एग्जाम्पल मैंने लिया कि ईगो आया था, तो मैं चलो शेयर कर लेता हूँ. तीसरे में मुझे लगा कि एक पॉइंट मुझे पकड़ा गया, पता नहीं. एक था कि ऑफिस का कोलीग ने मुझे बोला कि तुम्हें ईगो बहुत है. ठीक है, तो मैंने, यार मुझे पता नहीं, होगी ईगो होगी, मैंने फिर उसका अलग से बैठाया. तो पहले कि नहीं ईगो है, बाद में कहता है मैं तो तुम्हें डाउन करने के चक्कर में ये तुम्हें ऐसा बोल दिया था कि जिससे कि तुम थोड़े से घबरा जाओ. नहीं सर, मैं समझ गया आपकी बात. आपका अभी अपना ईगो आपको समझना है, और कोई नहीं समझ सकता.
वो आपको ही समझना बाकी पड़ेगा। ईगो जो मुझे अभी लग रहा है कि ईगो ये भी है, अगर हम अपना, मेरा नाम जैसे है अनिरुद्ध कुमार, तो इससे मैं दूसरे से अलग हो रहा हूँ, सेपरेट हो रहा हूँ, तो ये ईगो में नहीं, आएगा? वो नहीं है, वो नहीं है, ये तो बहुत वो जनरल बात कर ली आपने। ये ईगो में ठीक नहीं है, आएगा। आपको ये समझ सकते हैं शायद, या ये है कि मैं सही हूँ, बाकी लोग मुझे नहीं समझते, ऐसा कुछ होगा आपका, सोच के देखिए। नहीं सर, पता नहीं, देखते हैं, हाँ, तो सोचते हैं देखिए, सर। पहले जब तक वो नहीं देखेंगे फायदा नहीं है ना, फिर तो थ्योरेटिकल है सब, हाँ जी, लाइफ से एक्सपीरियंस ढूंढना पड़ेगा आपको। ओके, लेट्स एक्नॉलेज ठीक है। अनिरुद्ध जी, तो ओके लुक सर। मोर इनटू योर लाइफ। Okay, anybody else who would like to share? And Sanjeev, if you're ready, let me know if you want to share something. Shashi, actually, I'm driving, so I want to say a lot of things, but I'm actually focusing on driving. Okay, so So, whenever your video is on, you can let me know. yeah, Then I will. absolutely. But only thing I would like to say out here, one thing at the moment, I'll speak maybe after once I reach Shashi. Uh, whenever we talk about healing, the important thing which I feel is that whether it is ego or any sort of thing, your self-focus, self-thought has to be related to healing. In a way, if I say, अगर आप इसको जनरल करके छोड़ दोगे या किसी के ऊपर छोड़ दोगे और आपका ओन पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वहां पर आई फील हीलिंग का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली स्लो होता है, और सेल्फ पार्टिसिपेट करते ही उसका इम्पैक्ट बहुत हाई हो जाता है. Absolutely. Absolutely. That's what That is the topic that we were actually I mentioned, and that is what I want people to look into. So thank you, Sanjeev, for sharing that. Let's acknowledge Sanjeev. Yeah, and whenever you are ready to share more, you can switch on your video so that we can all hear from you. Sure. Okay, anybody else? Anything else opening up? क्या खुल के आ रहा है? ज्योति जी, देवेश जी, बलजिंदर जी, हर्ष जी, कुछ भी? आलोक जी, कुछ ओपन अप हो रहा है? एनीथिंग दैट यू कुड सी फ्रॉम योर लाइफ? आई डोंट वांट इन जनरल, आपकी लाइफ में कभी को ट्रिगर हुआ, क्या मास्क हैं, कुछ ओपन अप हो रहा है, देन यू कैन शेयर. अदरवाइज विल मूव ऑन टू द थर्ड एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, which is healing your ego. Right? So we have understood how not to trigger the ego. We have seen that we have to embrace the ego. हमको ego को destroy नहीं करना है. Ego को let it be. Just simply let it be. Embrace the ego, heal the ego. Healing the ego means you are accepting what happened as a child is okay. And then you integrate that unhealed child into your being. So integration के साथ साथ वो freedom मिल जाएगी, and you will be free from the clutches of the ego. And how do you heal the ego? This, if you ask me, there are different forms of sadhana that we, spiritual journey में बहुत सारी साधना हैं जो हम follow करते हैं, and I'm sure all of you must be following some form or the other. So it could be Raj Yoga, it could be Karma Yoga, it could be Bhakti Yoga, it could be Gyan Yoga, it could be Pranayama, meditation, yoga, whatever you are thinking of. Your scriptures, you are reading the scriptures, which is part of the Gyan Yoga, right? So you can follow any path of spirituality which suits you, which is actually a process of healing your ego. क्योंकि आप अपने विकारों को ही दूर कर रहे हैं, आप अपने चित्त को ही साफ कर रहे हैं, तो आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं, right? Just like we take bath to cleanse our body, so you are doing different levels of sadhana to cleanse your mind, subtle body. When I say mind, I'm talking of the mind body. So talking of मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, है ना? And इसी अहंकार को हम ईगो बोल रहे हैं. तो ईगो is the, you can say, the formation of all the sanskars which are tamasic or rajasic in you. That is how the ego is getting formed. So you can heal the ego with your spiritual pursuits. You can heal the ego by the help of an expert, and you can heal the ego by taking the responsibility that yes, pain or hurt जहां मर्जी से आया हो, उसको heal करना मेरा काम है. When you participate in it, like Sanjeev said right now, unless you participate in your healing process, the healing will not have much effect. If you want a, you can say, very, very strong, impactful life free from ego, you have to participate in your healing process. And this you can do in different ways. Either you follow the instructions this expert is giving you, or you choose your own spiritual journey and move ahead on that. Right?
So I hope I have made some things clear. Any doubts? Any question you have, please ask. Sannata. Huh? Okay. Whatever is opening up. Anything that is opening up, anything, anywhere you find that you are still struggling with the bondages or clutches of ego. अभी तक आप अपनी ego को बाहर नहीं निकल पाए हैं. Right? So angry young man is also a personality, by the way. It's a mask. Sir, what if a person doesn't want to get a help from an expert then? मैंने बताया ना, अपना तरीका है ना, उसको सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में खुद पार्टिसिपेट करे, स्पिरिचुअल हीलिंग पे अपने जाए, मेडिटेशन करे, प्राणायाम करे, योग मार्ग पकड़े, कोई भी 4 मार्ग मैंने भी बताए हैं, कोई भी मार्ग पे चले. हाँ, पर 30 साल से अगर ईगो को पाल पोस के बड़ा किया है तो अगले 30 साल मेडिटेशन करनी होगी उसे. हाँ, या ज्यादा, क्योंकि पिछले कई जन्मों से भी ईगो चल रहा है. तो इफ यू आर रेडी फॉर दैट स्पिरिचुअल परस्यूट, गो अहेड एंड डू इट. इफ यू वांट सम फास्टर, जैसे बैलगाड़ी में भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, या फ्लाइट भी पकड़ सकते हो. फ्लाइट पकड़नी है तो कम टू एन एक्सपर्ट, दे विल गाइड यू. फाइंड ए गुरु, they will guide you. It should make your journey faster. You should be able to travel on the journey faster. Then it is the right path for you. So first you have to see which path, then you have to see which guru, and then you have to see overall it is making an impact in your life in a positive way. It has to make you physically, mentally, emotionally fulfilling and stable. Then only it is a spiritual path for you. Otherwise it is not a spiritual path. Otherwise you are fulfilling some desires, and you don't even know when you're fulfilling that desire whether it is tamasic or rajasic or sattvic, unless you are very clear about it. So that is why you need a proper guidance. If you're traveling on a path which you don't know, better have a guru. Like Sadhguru says, GPS is what? Guru positioning system, right? So you position the guru in your life. So GPS is Guru positioning system. So you have a guru, he will be a good guide for you. Otherwise, your guru is your soul. You are the soul and you are your own guru. The outside guru is only going to show some light. आपको जगा देंगे बस. उसके बाद आपकी जर्नी आपकी खुद है. Right? तो बहुत सारा मैंने ज्ञान दे दिया. So let's have some people share what is opening up. Anybody who wants to share? Anirudh ji, you want to share? Yeah, go ahead. 1 मिनट. यस सर, ये एक तो आपने अच्छा बात बताया कि अगर ईगो है, आपको हमें लगता है कि ईगो है और वो सोल नहीं हो रही है किसी को, तो बेटर ये है कि एक्सपर्ट से अपने उसको अंदर ना रखकर बेटर टू गो टू एक्सपर्ट. और आपने यहाँ थोड़ी मार्केटिंग, यहाँ से आपने बताया, यहाँ तो बहुत आपसे अच्छा एक्सपर्ट कौन हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है सर. माइंड अगर हिप्नोथेरेपी करानी है तो मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें. फिर आपको संजीव के पास जाना होगा. चलो, राइट. टैरो रीडिंग करानी है तो आपको गुंजन के पास जाना होगा. ओके सर. स्पिरिचुअल हीलिंग करानी है तो मेरे पास आ सकते हो. ओके सर. राइट. बाकी मैंने इसके अभी ईगो के बारे में सोच रहा था, तो मैंने इसको ठीक करने के 3 मुझे वो लगे पॉइंट. पहला पॉइंट है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड अदर्स एज दे आर. अपने आप को जैसे हम एक्सेप्ट करें, दूसरों को भी वैसे एक्सेप्ट करें. नंबर 1. सर, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे तो ईगो खत्म हो जाएगा. आप समझिए हम बात उसको को. खत्म करने के लिए कह तो रहे हैं. एक्सेप्ट कैसे करोगे जब तक आपको मालूम ही नहीं है आपको कौन सा ईगो पैटर्न चल रहा है? वरना थ्योरेटिकल हो जाएगा. मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अनलेस यू, इफ आई से आई हैव ए विक्टिम ईगो, नाउ आई नो आई हैव ए विक्टिम ईगो, आई कैन हील दैट. मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ. मेरे को पता ही नहीं है मेरा ईगो कौन सा, सुपीरियोरिटी है या इंफीरियोरिटी है, विक्टिम है या गिल्ट है, ब्लेम है या अलूफ है. तो मैं क्या हील करूंगा? सर वही मैं आपको ये आपकी बात ये कह रहा हूँ कि जो हम अपने ईगो है या अपनी कोई प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करो, तभी तो प्रॉब्लम सोल्व होगी. चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन हाँ जी. सेकंड ये है कि जैसे हम जैसे हम यहाँ बात भी कर रहे हैं काफी से कि ऑल आर इक्वल. हम किसी से अपने आप को ग्रेटर या वो ना समझे. तो दूसरा ये है, उसको अपने अंदर लाना पड़ेगा. और तीसरा जो है, जो मुझे जो फायदा हुआ जिसको करने से,
कि एक बारी हमने सुना था, तो उसको मैं कहा कि आई एम यू, वी आर हिम। तो इसमें जो है ईगो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आई एम यू, वी आर हिम, ओके, तो ये बहुत पहले सुना था, तो इसको मैं फॉलो करता हूँ, तो इसमें मुझे फायदा हो जाता है। ठीक है, राइट, ओके। ओके जी, थैंक यू। लेट्स एक्नॉलेज अनिरुद्ध जी। बट अनिरुद्ध जी, आई विल स्टिल इंसिस्ट कि आप थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करिए और ईगो टाइप पे पहले जाइए। मैं ईगो कर रहा हील हूँ हो सर। चुका होगा, लेकिन पहले आप पता लगाइए आपका ईगो क्या था, कैसे आपने उसे हील किया, कैसे आप उससे फ्री हो। सर मैं 15 दिन से ढूंढ रहा हूँ, अभी और ढूंढ लूँ। ओके, फाइन, ओके गुड। सर। लेट्स एक्नॉलेज अनिरुद्ध जी। ओके, एनीबडी एल्स? वेलकम वेलकम कुमार त्रिशम जी, और लेट आए हैं आज। आईफोन, दोबारा आईफोन है। आईफोन कौन है पता नहीं, हाँ, तो अपना नाम बताइए तभी पता लगेगा। ऑल राइट, एनीबडी एल्स मीनवाइल, एनी हु वांट्स टू शेयर? ओके, राइट, आलोक जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? नाउ वी आर अप्रोचिंग द क्लोजिंग ऑफ द सेशन। I have to find out this ego type and ओके, trigger factor and ego type. ओके, ओके, So फाइन, I think not तो at कोई बात present, नहीं। but I have to find out. हाँ, कोई बात नहीं, तो आप देखिए जब भी आप टफ सिचुएशन में आते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट स्टेटमेंट, उससे भी पता लग सकता है। इफ यू से हाय मर गया अब मेरा क्या होगा, तो वो विक्टिम ईगो है। अगर अच्छा, आप लोगों को ब्लेम करना ये शुरू कर देते हो, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी झंड हो गई, तो आप ब्लेमिंग ईगो में हो, ये कंप्लेनिंग भी ईगो नहीं में है। हो, है हाँ ना? जी। तो आप देखिए कौन सा ईगो है, क्वेश्चंस देखिए, टफ सिचुएशन में आप कौन से सवाल बोलते हैं। ये सारे बेवकूफ है, मेरे को समझते ही नहीं है, देन यू आर इन ए डिफरेंट ईगो, आई एम राइट एंड दे आर रॉन्ग। ये भी एक हाँ ईगो है जी। कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत है, मेरे को समझते ही बाकी नहीं है कोई। तो स्टेटमेंट क्या है आपका, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, आप बैक ट्रैक करके जा सकते हैं कि मेरा ईगो कौन से ट्रिगर हो रहा है, अच्छा। करेक्ट? और फिर वो ईगो आ हाँ जाएगा, तो उसका मास्क क्या है, उसको छिपाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, या पहले मास्क दिखेगा और मास्क से देखिए किस क्या छिपा रहे हैं मास्क से। हाँ जैसे जी। अगर मैं आपको बताऊं, कोई बहुत गुस्से वाला है, हाँ, इंसान, हम्म। एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन, हाँ, तो अगर आप देखें, चलिए फिल्म के कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। फिल्म जंजीर, एंग्री यंग मैन, स्माइल भी नहीं किया पूरी जिंदगी उसने, पूरी पिक्चर में, हाँ, सिर्फ एक सीन में स्माइल किया, तो एंग्री यंग मैन का इमेज था। ये क्या है, ये मास्क है, क्या छिपा रहा है, स्केयर्ड चाइल्ड, जिसने अपने माँ बाप को मरते हुए हाँ देखा था। तो ईगो क्या है, स्केयर्ड चाइल्ड, क्या दिखा रहा है, एंग्री यंग एंग्री। मैन, समझ गए? तो एंग्री यंग मैन का मास्क है, बच्चा है जो डरा हुआ है, बिल्कुल माँ बाप को उसके सामने मार दिया गया, तो डरा हुआ बच्चा है। गेट माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी, मास्क क्या है, वो किस ईगो को छिपा रहा है, ये दोनों पता लग जाएगा। उस घबराए हुए बच्चे को सांत्वना दो, उसको प्यार करो, उसको गले लगाओगे, आप ईगो से फ्री हो गए। अब ना एंग्री यंग मैन की जरूरत नहीं है, नाउ यू कैन बी ए कॉमेडियन ऑल्सो, नाउ यू कैन बी ए, गेट माई पॉइंट? हाँ सो जी, हाँ। नाउ आपके पास फ्रीडम है, एंग्री यंग मैन होने की जरूरत नहीं है, यू कैन बी ए हैप्पी यंग मैन, you can be a happy Govinda man, correct? You can be a हाँ Dharmen. You don't have to be an angry young man of Amitabh, समझ रहे हैं? वो ईगो से फ्री हो गए। हाँ ये है फ्रीडम का मतलब, ये है नाउ यू हैव द होल पॉसिबिलिटी, आप कुछ भी बन सकते हो। और वो ईगो आपको एक ही तरीके से बिहेव करना सिखाता है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू लुक एट। हाँ जी। हाँ, ओके। क्लियर? वेरी गुड आलोक जी। So this is how you need to look at it, and thank you for triggering me to say that. Okay, let's acknowledge Alok ji, and I hope this has made things clear for everybody. Yes, Sanjeev is back. So Sanjeev, over to you. Shashi, thanks, and that was a lovely declaration for everything. I have very small point to say कि जैसा भी अनिरुद्ध जी शेयर कर रहे थे, he was talking very valid point, बहुत अच्छा था, बट थोड़ा सा हम लोगों को ईगो की अंडरस्टैंडिंग में what I feel we have to become a child. It's like अगर हम अपने घर में देखें कि हमारे घर में बच्चे हैं and they are studying, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे को ऑब्जर्व करना, बच्चों को बोलते हैं भाई तुम्हारे पास तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, बोलते मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ,
बट मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज वो अपने उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, इंटेलिजेंटली सिर्फ बात कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पर हमें एकदम इंटेलिजेंस को छोड़ के देखना पड़ेगा, तब हमें रियल ईगो मिलेगी. आई हैवंट शेयर्ड माय एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैंने स्कूल में जब शुरू में पढ़ाई करी, आई हैड स्टडीड ओनली इन बॉयज स्कूल. ओके. एंड मेरे लिए सबसे बड़ा ये हो गया, तो मेरे जो कुछ एक्सटर्नल फ्रेंड्स थे उनकी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती थी. एंड पीपल स्टार्टेड टीजिंग मी कि भाई तेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं. अरे कहाँ से लाऊं भाई, स्कूल में जाऊंगी, इससे बातचीत करूंगा. एंड आई रियलाइज्ड कि मैं बात करने में, जो और भी दुनिया में लोग मिलते हैं उनसे बात करने में बड़ा घबराता था. और फिर एक दिन ना वो ईगो चढ़ा, मैंने मास्किंग करी और मैं इतना बोल्ड हो गया कि मैं जाके किसी से भी बात कर लूंगा. नाउ दैट गिव मी अ रियलाइजेशन आफ्टर सम टाइम कि मैं क्या कर रहा हूँ. सो एक्चुअली मैं शशि, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हीलिंग, दैट्स वेयर आई थिंक बी लाइक अ चाइल्ड, be receptive, open to yourself, understand. I think that's the best thing we can do at the moment. Thank you very much. Wow, that was great and very, very expressive and very, very clear understanding, right? तो एक बच्चे को बोला गया तू ये नहीं कर सकता, and he said मैं करके दिखाऊंगा, kind of stuff. Even that is an ego. वो भी mask है. So basically ego क्या है? I want to be accepted. Get my point? I was So that is what about to say that I also went rebellious after that. When my ego was triggered, every time I got rebellious. Absolutely. So being a Yeah. rebel is an ego. Yeah. You rebel against authority. Yes. And who are the authority as a child? Parents. तो parents के Yeah. against rebel किया, फिर principal के against rebel किया, teachers के against rebel किया, society के against rebel किया. You became a rebel after that. That is just like an angry young man. और क्या चाहता है? सबका प्यार चाहता है, सबकी acceptance चाहता है. Wonderful. So that is another way you can look at your life, right? I am sure something must have opened up for everybody. All right. Yes, Sanjeev, you want to share something? Actually, just I want to say कि हम इतनी जो चीजें देख रहे हैं, इसका एक साइकोलॉजी में एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं TA, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, मे बी कभी हम लोग देखते हैं, इसको टच कर सकते हैं क्या? This will become crisp and clear for everyone. Absolutely. Absolutely. So I don't want to get into the theory part. That's why I was trying to pick up the experiential part and try to get in the wisdom here. Yeah. All right. Very good. Let's acknowledge everybody who shared. And now we are coming to the closing time. So let's take some sharings, right? But just to summarize everything that we have seen. So when we are talking of healing the ego, the first understanding is that you are embracing the unhealed child in you, because ego was created by the child, not by a 30-year-old person. So that unhealed child is crying, crying, crying to get attention and love and acceptance. So the moment you accept, love, and respect the child in you, that ego is healed. And now you get freedom to live your life whichever way you want. You have the power and the freedom to live the life powerfully, to create magical results in your life. And then you will be able to complete with your parents, complete with all the people in your life, and live a very, very fulfilled life. Because ego is always a survival mechanism. Understand this. You cannot experience fulfillment by operating from ego. ego सिर्फ survival के लिए है. Fulfillment के लिए ego को छोड़ना पड़ेगा, उसको heal करो, और फिर अपने self को invoke करो, which will be self-love or the divine part of you, and then you will live a fulfilled life. So that's the learning from today. And with this, we come to the end of the session. So keep sharing. What are you taking away? One line each. अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. एक लाइन में बताइए क्या लेके जा रहे हैं इस सेशन से for healing your ego. Yes, कौन बोलना चाहेंगे? Fast. What are you taking away? 1 घंटे का सेशन हो गया. You are not taking away anything? Don't give me such a heart attack. नहीं Self-love and actually healing. मैं Sir, self-love and healing. That's Very the good. only Very good. thing.
Gunjan ji, very good. Self-love and healing. It's acknowledge. Very good. एक line. Fast बोलिए, and then we will close the session. I'm Yes, Parth. taking awareness. I'm taking awareness because जैसे अभी मतलब अभी की ही बात है. अभी मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा था. जैसे मैंने बीच में हाथ उठाया था काफी टाइम पहले. ठीक है. सो दिमाग में सेंटेंस आता क्या बोलना है, ये बोलना है. आई नीड टू शेयर बिकॉज मेरे पास में आइडिया है. ठीक है. बट अभी तक मेरे को मौका ही नहीं मिला. सो जो भी पार्ट था जनरली अगर ईगो पार्ट रहता तो आई वाज लाइक कि भाई नहीं बोला, फिर मैं बाकी लोगों की बातें सुनना बंद कर दूंगा, वही सोचता रहूंगा, बाद में गुस्सा हो जाऊंगा कि भाई किसी ने सुना नहीं. ठीक है. तो मैं ये नहीं बोलूंगा 100% कि अभी वो इमोशन चला गया. ठीक है. बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस जरूर है उस चीज की. ठीक है. सो आई वाज लाइक चल कोई भी, किसी ने नहीं सुना तो तेरे काम आ गया, किसी और के कभी और टाइम पे काम आ जाएगा. लाइक दिस थिंग काइंड ऑफ हैपनिंग. सो जरूरी नहीं हमेशा रूट कॉज की तरफ जाया जाए, बट दीज जैसे सर ने कहा कि ट्रांजैक्शनल. सो ये अवेयरनेस के साथ में भी कहीं ना कहीं इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. Awareness and right understanding is the key to everything. When you are aware and when you have the right understanding, you will create magic in your life. Right? Thank you, Parth, for sharing that. Very good. Right. Anybody else? What are you taking away? Alok ji and Anuruddh ji to introspection mode mein hai. I will introspect myself Yes. and I will find out my ego type and then I will heal. Yes. Very good. And then you can have a call with me. ठीक है. All right. जिनको अभी तक ego type नहीं मिला, जैसे ही ढूंढ लें मेरे को फोन करिए and we will have a discussion so that you will know what is the next path for you. All right. Let's acknowledge Alok ji and Anuj ji. Yes, Amit ji, what are you taking away? I think for the last 3 sessions, I think collectively I can talk about it has given me a very different perspective to look at the genesis of ego and what needs to be done about this in very specific ways to still see these solution areas. So as I shared earlier also, this was not the perspective that I had ever had about ego. Yeah. Okay, very good, Amit ji. So that's a good learning. Very good. Okay, now Harshi, Baljinder, Jyoti ji, anybody who wants to share? Devesh ji, iPhone, कौन बोलना चाहेंगे? Fast. One line. What are you taking away? Anyone? Okay, Devesh ji, are you there? Jyoti ji? All right. So with this, we come to the end of the session. We are already 3 minutes over time, so I will close the session. Harshvardhan ji says understanding. Okay. So you're taking away understanding or you're understanding the session, whichever way it is okay. That's perfect. All right. So any other last and final call? Anybody wants to share? Okay, so we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. Enjoy a great week. And by the way, this was a Happy New Year, first session of this year. Yes. So congratulations to everybody. We have moved into 2024. And this is the first session. So next week we will have some other agenda and we will move on with full velocity and freedom. And definitely there is a surprise for all those who are in DHV. Wait for the surprise. Tomorrow there should be some information about some wonderful post which is coming to you. So be on the lookout. Don't skip the post and you will see some magic happening in DHV. All right, with this we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great week. Aham Brahmasmi. Good night. Bye-bye. Take care. Bye-bye.